सियासती दो बदमाश लोग जो दुनिया के जो कातिल है आजम है, वो दो जगह एक साथ मिल रहे हैं। एक खतरनाक अलामत है, और हम समझते हैं कि जो जुल्म सितम और बर्बरियत का दौर बरपा है वो चला लें। अजीज साई, अगर आप चलाना चाहते हैं चला लें जी। अजीज साई ने जो वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में गवाही दी है मकबूजा कश्मीर में जो तो मैं आप उसको पहले चलाएं फिर मैं बयान करूं। वो चला लेते हैं, वो हम नाज़रीन के लिए हम चलाते हैं, फिर उससे बात कर लेते हैं। Much of the things that I have to say in my oral testimony, of course, has been covered by my co-panelist, Mr. Sifton. Two things are very important to know about the current status of human rights in India. One is, why is it happening? And two is, where do we see it going from here? The first part, Mr. Sifton, towards the end of his oral testimony, he hinted at it. And he said, we should recognize that Mr. Modi's BJP party is an actor. I would like to make a small amendment to that, and I would say it is the director and not just the actor. It is the producer of human rights violations in India. It is the director of human rights violations in India, because it springs from an organization which is fundamentally racist, human rights, an organization that has indulged in human rights abuses and violence for nearly 90 years. This is an organization which is known better by its acronym called RSS, which is a self-avowed, self-confessed Hindu supremacist organization. And the BJP is a political wing of that organization. And Mr. Modi is not only the best-known leader of that organization, he is also the Prime Minister of India, coming from the BJP, which is the political heir, the political wing of the RSS, which part of its documentation, part of its core principles is to turn India into a Hindu nation where non-Hindus, who are about 20% of India's population of 1.3 billion, the non-Hindus such as Muslims and Christians, as well as Sikhs, they do not have any rights, or they have far fewer civil and political rights than Hindus have. That is a stated goal of the RSS, and that is how it has been since 1925, when this organization was set up. This organization was one of the people who was the main assassin of Mahatma Gandhi in 1948. There has been lingering doubts about his involvement with this organization, even though this organization has consistently denied it. The fact is that he worked very closely with members of this organization back in the 1930s and the 40s, before he went on to assassinate Mahatma Gandhi, who upheld the principles of secularism and India being a diverse country, as Congressman Trent Franks noted. I want to talk about the fact that what has been happening with the rise of Mr. Modi's government is that the hate-filled and bigoted ideology of the RSS has become one of the big motivations behind the widespread human rights violations across India, especially since he became Prime Minister. So we need to understand why this is happening. It is not as if this is happening, this is being done externally by some other people. It is being carried out by people who are connected with the government of the day, and therefore who will have the courage or the conviction of that courage to carry out any kind of counter, presenting a counter to such activities. And of course, we have talked about the Dalits. I'm very glad that you have talked about the Dalits. You see, the ideology of Hindu supremacism is not limited to abusing India's religious minorities. Indeed, the rigidly hierarchical caste system of the Hindu society has for centuries discriminated against those lower down its chain, to such an extent that they have been the infamous untouchables of the Indian society. And then we need to add to this list India's 15% tribal people, who have traditionally inhabited vast forested stretches, millions of who have been forcefully dispossessed of their lands and homes over decades to make way for industrial projects, as you noted just now yourself. And that is why, as a result, thousands of them have been fighting back, in my view, in the view of many of us, in a misplaced fight back. But nonetheless, there is an armed insurgency raging through the central Indian forests today as we speak here.
What has happened is that paramilitaries are now the only government across much of central India where such insurgency has caught momentum in the last 15 years, and this has led inevitably to massive human rights abuses by local police and the paramilitaries, because they target innocent people, the innocent citizens of India, and put them in prisons on false and charges and fabricated evidences. This is something, as you noted, Chairman, Honorable Chairman, I have covered in my journalism through the years. They are said to have died, they are said to have suffered huge, massive human rights abuses at the hands of the Indian Army, which have been documented. There have been, you talked about the northeastern states of India. There's a law since 1958 on the statute of the Indian Constitution, the same Indian Constitution that guarantees equality before law. That there's been a statute in the Indian Constitution which says that armed forces have special powers over certain regions of the country, and for the last 50 years, under those special powers, they have had complete and total impunity from all the crimes that they have committed against the local people there. Just 2 days ago, and I have mentioned that in my written testimony, just 2 days ago, the current chief of the Army's Eastern Command Wing, which is under which that region comes, he clearly said there is no problem. There's no problem with that Armed Forces Special Power Act. It's all fine. Whereas the Supreme Court of India, in its own judgments and commissions headed by Supreme Court judges, have time and again said that this is a completely ridiculous law. It has caused the violations of human rights on an industrial scale, and they should be done away with. देखिए साहब, वो ये कहता है कि बरसों से जात पात का जो वहाँ पर सिलसिला जारी है, उसने बहुत तफरीक को बढ़ा दिया है. इंडिया के 50% कबायली निज़ाम के तहत रहती है, वो सब इनकी बगावत के सारे इलाकों में बगावत है. वो हम एक ज़माने में तो कह चुके हैं, फिर दूसरी दफ़ा कहेंगे. इस एहसास से बेचैनी फैली है और अलहदगी की तहरीकें जन्म ले रही हैं. सेंट्रल एशिया में गुज़श्ता 15 साल से इन तहरीकों ने जोर पकड़ा है. भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस ने लोगों को कत्ल किया है, बेगुनाह लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार किया है. इस तरह इंसानी हकूक़ की पामाली का सिलसिला जारी है. जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली जारी है. ये खित्ता मुतनाज़ा है. 1989 के दौरान हज़ारों बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल किया गया है, गिरफ्तार किया गया. भारतीय आर्मी ने कश्मीर पर जो मज़ालिम ढाए हैं उसकी कोई इंतहा नहीं है, कोई हद नहीं है. हालांकि भारतीय आइन के मुताबिक किसी शहरी के इंसानी हकूक़ को तलब नहीं किया जा सकता, लेकिन भारतीय आर्मी की जानिब से मज़ालिम जारी है. भारतीय आर्मी चीफ कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली नहीं हो रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा, इस फैसले में कहा है कि मकबूजा कश्मीर में इसके बरक्स हो रहा है. लोगों को मारवाए अदालत कत्ल किया जा रहा है. जी अच्छा, अब वो तालिबान के जो मुज़ाकरात उस पर भी एक बात साहब, इसमें उसने कश्मीर का जिक्र किया, हमें दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये कि उसने कहा है कि मोदी इंसानी हकूक़ की पामाली के सरखेल हैं, और उसके बल्कि उन्होंने कहा था कि ये एक्टर हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि ये तो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर साथी ने कहा जी. उनकी जो ये एक अजीत शाही साहब हैं जो इंडियन सहाफ़ी हैं, तो वहाँ भी जो बात उठ रही है आवाज़, और मोदी इंसानी हकूक़ की पामाली के जिम्मेदार है. जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, राष्ट्रीय सेवक सिंह का सियासी विंग है, RSS, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है. राष्ट्रीय सेवक सिंह के मंशूर में दर्ज है कि भारत को एक सेकुलर रियासत से हिंदू रियासत में तब्दील करना है, जबकि भारत की एक तिहाई आबादी हिंदू नहीं है. इसमें मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिख और दीगर कौमें हैं, और ये कौमें इंसानी हकूक़ से महरूम है. यानी ये जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं. राष्ट्रीय सेवक सिंह का क़याम, RSS का क़याम 1925 में हुआ था. इस तंजीम ने 1948 में महात्मा गांधी को कत्ल किया. अगरचे इससे लोग इनकार करते हैं, हक़ाइक़ यही है कि राष्ट्रीय सेवक सिंह महात्मा गांधी के कातिल हैं. इस कत्ल के बाद भारत को सेकुलर रियासत से हिंदू रियासत की तरफ ले जाया गया. मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से राष्ट्रीय सेवक के मंसूबों को तक़वियत मिली. मोदी ने हिंदू इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया, पूरी इंडिया में इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया. इसके अलावा जो दलित हैं उनके साथ में भी उन्होंने बड़ा नीची ज़ात के लोग हैं उनका इस्तेहसाल किया है. और बरसों से जब जो ये तो 90 साल से कायम हुई है, लेकिन जो सदियों से चला आ रहा है, दलितों के साथ में उनको अनटचेबल कहा जाता है, उनको जूते पहनने की इजाज़त नहीं होती, उनको पेशाब पिलाया जाता है, उनको और करीब से गुजर जाए तो उनको मारा जाता है. सिर्फ 2.5% में जो ब्राह्मण है उनका, वो ये काम इनके साथ में करते हैं. सारी दुनिया को इनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए. और ये लोग जो हैं, ये सब लोगों को हम ये कहते हैं कि हमने ये अपने उस पर डाल दिए, आप इसको देख लें. मकबूजा कश्मीर में जो कुछ किया, मकबूजा कश्मीर में जो कुछ किया, उन्होंने जिक्र किया है कि मकबूजा कश्मीर में भी इन लोगों ने जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल इंसानियत सोच है. झूठे मुकदमात बना रहे हैं और हर तरह की पैलेट गन इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज बात की उसने जिक्र किया है.
हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये बात हमको कमेंट के जरिए बताते रहें। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना